Hello friends, welcome to my channel at the HotSpot. So today we continue our chapter acid, base and salt. We have done about acids and small topic of acid left, and chemical properties of acid, reaction of acid with metal carbonate with metals, and reaction of acid with hydrogen carbonate. So now we have to start from acid, strong acid and weak acid. So subscribe the channel and press the bell icon to get notification of next video, and like the video and share more and more videos to your friends and relatives so that we can complete 1k subscriber fast and we start live streaming. So first you watch first part of this chapter. I have already given link in the description, and then watch this part. And if you have any doubt in first part or any video of my channel, then you should comment in comment box, or you can message me on my Facebook account. I have given link on my in my description, and you can follow me on Facebook. So without waste time, we continue this chapter. So first, now we have to start from acids. So now we have two types of acid: strong acid and weak acid. What is strong acid? An acid which is completely ionized in water and produce H positive ions is called strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड रहता है, यानी कि वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयंस, दैट वी हैव कॉल्ड टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स. Here example of strong acid: hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, and nitric acid. So now we have weak acid. What is weak acids? An acid which is particularly ionized in water and thus produce a small amount of hydrogen ion. So here it is completely ionized, here partially ionized, and it produces H positive. It produces small amount of H positive ions. And example: acetic acid and carbonic acid. When a concentrated solution of acid is diluted by mixing water, then the concentration of hydrogen ion or hydrogen per unit volume decrease. So this is a type of note, or but it is very important. So as our acid part is complete, now we have to start from bases. What are bases? Bases are bitter in taste, have soapy touch, turns red litmus blue, and gives hydrogen ion OH negative in aqueous solution. Acid converts blue litmus into red, and bases convert red litmus into blue. They are sour in taste, these are bitter in taste, and have soapy touch. Example of base is sodium hydroxide, caustic soda. ये केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम उसको कास्टिक सोडा कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, that is caustic potash. So now we have a 3 or 5 marks question, that is properties of base. So first property is bases have a bitter taste, they soapy to touch, turns red litmus to blue, bases turn red litmus to blue, conduct electricity in solution, means bases conduct electricity in solution, and release OH negative ions in aqueous solution, and acid release H positive ions. So now we have types of bases. Bases can be divided into two types: water soluble, water insoluble. The hydroxide of alkyl and alkyne earth metals are soluble in water. They are known as alkyl. For example, sodium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide. Alkali is considered as a strong base. alkali हम एक strong base मानते हैं, और जो हाइड्रोजन होती है alkali की, alkyne earth metal तो soluble होते हैं water में, इसलिए उनको alkali कहते हैं. Now we have chemical properties. First, reaction of base with metals. जब base metal साथ react करे तो क्या होगा? When alkali means base react with metal, it produce salt and hydrogen gas. जब भी हम किसी बेस को मेटल साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, यानी प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट करेगा. एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम जिंटेक्ट व्हेन रिएक्ट विद जिंक मेटल. जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को
जिंक मेटल के साथ रिएक्ट हुआ है तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस आई और सोडियम जिंक एक्ट में, इट मीन्स इट इज अ सॉल्ट. So this is equation of sodium hydroxide with zinc, and this is salt and hydrogen gas released. Now second example is sodium aluminate and hydrogen gas are formed when sodium hydroxide with aluminum. हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसी के साथ हमने रिएक्ट किया एल्युमिनियम और वाटर, हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी एक रिलीज और एक हमारे पास सोल्ट आ गया सोडियम एल्यूमिनेट. So this is also example, calcium hydroxide gives calcium carbonate in water when react with carbon dioxide. सॉरी एक बीच में पॉइंट छूट गया था, अगला एग्जांपल आ गया तो. सो नाउ इज रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल. जब हम बेस और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल की रिएक्शन कराएंगे थे तो क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल ऑक्साइड. When carbon dioxide is dissolved in water, it produces carbonic acid. Therefore, when a base reacts with non-metal oxide, both neutralize each other, resulting respectively salt and water. It means क्या है, जब भी हम बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, एक सॉल्ट और एक वाटर. तो यहाँ पे कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है और जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करे, कार्बनिक एसिड. सो नाउ ये एग्जांपल एक था कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को साथ कार्बन के साथ रिएक्ट हुआ तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर. एंड अनदर एग्जांपल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर व्हेन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड. सो नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइज रिएक्शन. ये भी तरह न्यूट्रलाइज रिएक्शन ही थी जो हमने पहले की इससे, पर वो ये था ना नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ थी, उसमें डायरेक्टली हमने बेस नहीं कहा, एसिड नहीं कहा, इसमें हम डायरेक्टली एसिड को करेंगे बेस के साथ. An acid neutralizes a base when they react with each other and respectively salt and water are formed. Since the reaction between acid and base both neutralize each other, hence it is also known as neutralization reaction. Example, sodium chloride and water are formed when hydrochloric acid react with sodium hydroxide. देखो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करी तो हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड और वाटर. In a similar way, calcium chloride is formed along with water with hydrochloric acid react with calcium hydroxide. जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की साथ रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास क्या आया, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर. सो फोर्थ प्रॉपर्टी इज reaction of acid with metal oxide. Acid metal oxide are basic in nature. Thus, when an acidic react with metal oxide, both neutralize each other. In this reaction, respective salt and water are formed. I think this is wrong reaction because we have distinct chemical properties of base, and sorry, this is a smaller mistake. Here is a reaction of base and metal oxide are basic in nature. This reaction is wrong. So we have only discussed three chemical properties. So next is common in all bases. जैसे हमने एसिड में पढ़ा था कि क्या कॉमन होता है, ऐसे हम बेसिस में पढ़ रहे हैं कि कॉमन है. अ बेसिस डाइसोलेट्स हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक बिहेवियर ऑफ कंपाउंड. जब हम बेस को डाइसोलेट करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन में वाटर में तो रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक बिहेवियर के लिए, किसके, कंपाउंड के. वी हैव एग्जांपल, when sodium hydroxide is dissolved in water, it diazotes hydroxide ion and hydroxide ion and sodium ion. इसकी इक्वेशन है. Similarly, when potassium hydroxide is dissolved in water, it diazotes hydroxide and potassium ion. जब हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को डिसोल्व किया वाटर में तो हमने उसे दो आयन कर दिए, एक पोटाशियम आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन. Thus, the base saw its basic character because of dissociation of hydroxide ion. So next is neutralization ion. Neutralization reaction. When an acid reacts with a base, the hydrogen ion of an acid combines with
hydroxide ion of base and form water. As these ions combine together and form water instead of remaining free, thus both neutralize each other. ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन तो हमारे पास इन वाटर है प्रोडक्ट में. Example 1, sodium hydroxide, that is a base, react with the hydrochloric acid. Sodium hydroxide breaks into the sodium ion and hydroxide. Hydrochloric acid breaks into hydrogen and chloride ion. Hydrogen ion and hydroxide ion combine together and form water, while sodium ion and chloride ion combine together and form sodium hydroxide. तो हमारे पास रिएक्शन दिखाई है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, एक सोडियम आयन, एक क्लोराइड, एक सोडियम क्लोराइड आयन. So this is second part of this chapter. So please share the video and like the video and subscribe the channel and press the bell icon to get notification of next video. And if you have any doubt in any chapter of class 10th, then comment in the comment box or message me on my Facebook account or follow me where I have already before 1 to 2 day I tell you about the next video. So thank you.